Namaste Gurkulians. I hope all of you are fit and fine at your homes. Today we are going to start our next unit, chemical kinetics. What is chemical kinetics? Chemical kinetics, as the name suggests, in this unit we will study about rate of reactions or the speed at which reaction proceed. It means कि किस स्पीड से कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्या है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल डिपेंड, एंड द मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन विल प्रोसीड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वो ब्रांच केमिस्ट्री की विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड its mechanism by which this reaction proceed, and its mechanism called as chemical kinetics. Means in this unit we will study about the rate of reactions and their mechanism through which these reactions proceed, जिनके द्वारा ये reactions reactant से किस में convert होंगे, products में. Depending upon the rate, there are mainly three types of reactions. Rate means on which speed. There are three types of reaction. First is very slow reaction. Second is moderate rate reaction. And third is very fast reaction. Very slow reactions, the reactions which takes months or years to complete, जिनको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए महीनों और सालों लग जाएं. देयर रेट इज़ वेरी स्लो. दीज आर कॉल्ड एज वेरी स्लो रिएक्शन. एंड सेकेंड इज मॉडरेट रिएक्शंस, द रिएक्शंस विच टेक्स फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स टू कंप्लीट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. एंड दीज आर वेरी फास्ट रिएक्शंस, द रिएक्शंस which are takes place in just a fraction of second. Example for very slow reaction, this is rusting of iron. You know rusting of iron takes a long time. Moderate reactions which takes few minutes, that is inversion of cane sugar. This is an example. Inversion of cane sugar. Third is very fast reactions. These are ionic reactions. Ionic reactions are very fast, only in a fraction of second reactant convert into the product. So these are the three types of reactions. In these reactions rate is very slow, in these reactions rate is very fast. So we cannot calculate rate for these reactions. We calculate rate for the moderate rate reactions. These are inversion of cane sugar, just like these types of reactions, because here time is very high, here time is very less. So we cannot calculate rate of these reactions. And different reactions have different rate. You can see from here. So how it will be different for the different reactions? Because different reactants, जिन reactants reaction में participate किए, their bond energy is different, due to which their rate also different. We can say that the rate or speed of reaction depend upon the bond present in the reactant molecules. Molecules के अंदर जो bond present है उनके ऊपर depend करेगा rate of reaction. If bond are weak,
अगर वीक होंगे तो ईजिली रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। इफ़ दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, और मॉडरेट विच कैन टेक फ्यू मिनट्स और आवर्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस जैसा कि अभी हमने स्टडी किया, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि मतलब किस तरह से कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ, कितना उसने टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो वी कैन से दैट चेंज इन concentration of any one of reactant or product any reactants or products with time, टाइम के साथ जो चेंज आएगा कंसंट्रेशन एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर दिस वी कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, we consider a hypothetical reaction. The reaction will be R is reactant, it will convert into product. Our product is P, and we consider the initial concentration of reactant at time T1. Reactant concentration is R1 and product concentration is P1 at the time T1. Now if this concentration at time T2 changes into R1 changes into R2 and P1 changes into P2. So we consider in hypothetical reaction R convert into P, reactant convert into the product. At time T1 concentration of reactant is R1, product is P1. At T2 R2 and P2 are the concentration of reactant and products. Then rate of disappearance of reactant and rate of appearance of product, क्योंकि जैसे जैसे देखो टाइम पास होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज इट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। और जैसे जैसे टाइम की पैसेज होगी या रिएक्शन प्रोसीड होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। सो वी कैन से दैट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपीयरेंस मीन्स कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है इट विल डिनोट अबाउट द कंसंट्रेशन R2 माइनस R1 एंड इन विच टाइम T2 माइनस T1। दिस इज द rate of disappearance of reactant with respect to passage of time, or we can say that change in concentration of reactant by time. It can be written as minus delta R by delta T. Delta represent the change in concentration of reactant, and why we apply minus sign, because the concentration of reactant we know decreases, R2 is less than R1. So it will come out to be negative, and this value negative sign only indicate the decrease in concentration of reactant. Similarly for the rate of appearance of product, rate of appearance of product, then how you calculate appearance? Concentration of product changes from P1 to P2, so it will be P2 minus P1 concentration by time T2 minus T1. So it can also written as delta P by delta T, change in concentration of product by change in concentration of change in time. And here sign is positive. Why it is positive? Because concentration of
product is increases with the passage of time. So these are the rate of appearance and rate of disappearance of the time. These equations represent the average rate. Why it is? Because delta represent the large change in concentration. These are the large change in the concentration. Now if we want to calculate the instantaneous rate of reaction, instantaneous means at a particular instant of time. So we can say that change in concentration of any reactant or product at particular instant of time, this is called as instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate, it can be calculated by at a particular instant of time. जैसे अगर हमारा क्या है, डेल्टा रिप्रेजेंट फॉर द लार्ज चेंज, सो फॉर दिस वी यूज द सिंबल डी. डी रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज, डी आर बाई डी टी. And for the product it will be plus dp by dt. This is for the instantaneous, and these terms are for the average rate of reaction. Average we calculate large change, and instantaneous we calculate the small change in rate of reaction. Now measurement of rate of reaction. For the measurement of rate of reaction at instantaneous and average, we draw a graph. To calculate instantaneous rate of reaction, we draw a graph between concentration of reactant and product with respect to time. कंसंट्रेशन का किसके रिस्पेक्ट में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एंड विद द स्लोप वी ड्रा ए टेंजेंट फॉर द इंस्टेंटेनियस. सो वी कैन कैलकुलेट चेंज इन कंसंट्रेशन विद दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. Small change, we can calculate the instantaneous rate of reaction graphically. And to calculate the average rate of reaction, we calculate change in concentration with particular two different instant of time. दो हमारे टाइम दिए जाएंगे, उनके बीच में जो कंसंट्रेशन का चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. सो फॉर दिस वी ड्रा ए ग्राफ. Two graphs are drawn, one for the reactant and one for the product. Here is the concentration of EC for the reactant, concentration of reactant, and here we take time. So for this we know as the time passes concentration of reactant decreases. So graph will be like this. If initial concentration, this is A naught, initial concentration of reactant, with the passage of time it will decreases. So the graph will like this. We obtained the graph like this. To calculate the instantaneous rate of reaction, it means we have to calculate means at that time instantaneous rate. So we draw a tangent for this. यहाँ पर हम इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे. देन देयर इज स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम. दिस इज आवर कंसंट्रेशन. विद रिस्पेक्ट टू दैट कंसंट्रेशन इज दिस, and with respect to this time is this. So we can say that this is small change in concentration, this is dr, and small change is time dt. So this denotes the instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction, it can be denoted as minus dr by dt for the reactant, minus dr by dt, or we can say that it is minus of slope. This is our slope minus. So we draw a tangent to calculate the instantaneous rate of reaction, and we calculate small change in concentration with respect to small change in time. And to calculate the average rate,
if we want to calculate at two particular instant of time, at point this and at this point. So for this is our time t1 and this is our time t2. We have to calculate average rate between these two instant of time. So with respect to this is the concentration at time t1. Concentration of reactant is R1. This is our R1, and at time t2 concentration of reactant is R2. Or this is our change in time. We can say that this is our delta T, and this is the change in concentration. This change, it can be represented as delta R. So for this, rate average will be equal to minus delta R by delta T. This is the calculation of average rate of reaction, and this is for the instantaneous rate of reaction. We can calculate for the reactant because concentration of reactant decreases with particular instant of time. जैसे जैसे टाइम पास होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी. अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है रेट हमें, देन वी ड्रा ए टेंजेंट अक्रॉस दिस एंड कैलकुलेट स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन एंड स्मॉल चेंज इन टाइम. दोनों को डिवाइड करेंगे, वी कैन कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट. एंड फॉर द एवरेज रेट वी कैलकुलेट between two different instant of time t1 and t2 with respect to change in concentration R2 minus R1. So it is minus delta R by delta T. In case of the product, this is our concentration of product. We can represent as delta square bracket represent the concentration of product, and this is our timeline. So for this, we know concentration of product at time t is equal to 0 is also equal to 0. When the time passes, concentration of product increases. So the graph will like this. This is the graph for the product. If we want to calculate instantaneous rate, if we want to calculate here at that particular instant of time, we measure the time with respect to this, and concentration is this. For this, we also draw a tangent. We draw this tangent. This is our tangent with respect to this instant. So for this, we calculate the small change in concentration of product. This is our dP, and this is our small change in time dt. So we can calculate instantaneous rate with respect to this is equal to plus dP by dt. dP is the small change in concentration of product at that instant, and this is small change in time. And to calculate the average rate of reaction at two instant of time, if one instant is this and second is this, so time at this t1 and here time is t2. Between these two time interval t1 and t2, we have to calculate average rate. For this, we calculate change in concentration of product. This is the change, this is delta P, and this is change in time delta T. So we can calculate here average rate or average. It come out to be plus d it is for the delta because it is the large change, delta P by delta T. So we can calculate in both cases average rate, instantaneous rate, average rate and instantaneous rate. This is the graph for the product, and this is the graph for the reactant with respect to time. So we can measure the rate in both cases, in reactant as well as in the product. Instantaneous rate can be calculated and average rate can also be calculated. Next is unit of rate of reaction. Simply, what is the unit? Concentration upon time. Unit of rate of reaction.
we know that rate will be equal to concentration upon time, or rate is concentration by time, simply for the reactant as well for the product. What do you understand by concentration? Concentration is, you have studied in the unit solution, number of moles per unit volume. So you can calculate number of moles per unit volume. So it can be written as moles for the mole, unit is moles, and volume is liter inverse, time is second. So for this unit is mole per liter per second. This is our unit for the rate of reaction. And for the gaseous reactant या gaseous reaction, gaseous के लिए concentration में किसकी unit आ जाएगी? In place of concentration we use pressure, so this unit will be atmosphere. For the unit of pressure, atmosphere second inverse. These are the unit for the rate of reaction. This is all about the rate of reaction. Now how you represent a rate of reaction. So next topic is representation of rate of reaction. In numerical portion it help, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन में हमारी काफ़ी हेल्प करेगा. दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. मीन्स जैसे हमने बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, हाउ वी राइट इट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. इसके लिए हम एक जर्नल रिएक्शंस को कंसीडर करेंगे. फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन वी कंसीडर ए जनरल रिएक्शन. दिस इज ए प्लस बी गिव्स अस प्रोडक्ट. दिस कैन बी XX प्लस Y इंटू Y. What are these? Small a, small b, small x, small y. These are their stoichiometric coefficient. जैसे कोई हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं H2 + Cl2 gives us 2HCl, तो 1 1 2 वो उनके क्या हुए? stoichiometric कोफिशिएंट. इसीलिए हमने इस रिएक्शन के भी stoichiometric क्या ले लिए? स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल x एंड स्मॉल y. और जो ये है कैपिटल में a, b, x और y, these are कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. या इनको क्या कह सकते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं. देन अकॉर्डिंग टू दिस रेट ऑफ रिएक्शन, जनरली पहले हम सभी के लिए इकट्ठी लिख लेते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इनके लिए क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट decreases with passage of time, so we apply the minus sign, so it will be minus, and we use the symbol delta or D. We can use both from here because we don't know about average or instantaneous at that time, so we can apply minus 1 by A because we calculate rate of reaction divide by its stoichiometry. dA, change in concentration of A with respect to time, and all rate are equal if we divide by its stoichiometry. It can be minus 1 by B because these are reactant, dB by dt, and it is plus 1 by X dx by dt, change in concentration of X, and it is equal to plus 1 by Y dy by dt. These are the rate of reactions. नेगेटिव साइन फॉर द रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव साइन फॉर द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसलिए पॉजिटिव साइन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो इसलिए यहाँ पर क्या आया? नेगेटिव साइन. अगर हम पर्टिकुलर रेट किसी एक रिएक्टेंट के लिए या किसी एक प्रोडक्ट के लिए लिखना चाहें देन वी रिमूव देयर stoichiometry. अगर हमें लिखना है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, rate of disappearance of A, then you can write it simply dA by dt.
And if we calculate rate of reaction, then it should be divided by its stoichiometry. Similarly, for the rate of disappearance of B, then you can write minus dB by dt. Similarly, अगर हमें किसके लिए लिखना है, x के लिए, तो रेट ऑफ, अब डिसअपीयरेंस नहीं लिखेंगे, अपीयरेंस, x क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, अपीयरेंस ऑफ x, so it can be written as plus dx by dt. And for the rate of appearance of y, it can be written as plus dy by d. You can write simply this rate of appearance and disappearance. These rate can be divided by their respective coefficient, so rate of reaction become equal to with respect to their coefficient. अगर हम इनके क्या है कोफिशिएंट से इनको डिवाइड कर दें तो ये सारे रेट क्या हो जाएंगे, इक्वल, एंड दे आर कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन. अगर तुमसे पूछा जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, देन यू सिंपली राइट दिस. अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो ये सारे क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि हमने मोल कंसेप्ट में भी ये स्टडी किया कि जितना यहाँ से चेंजेस आएगा उनके नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिल जाएगी. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. अगर हम एक जर्नल रिएक्शन लिखे 5Br माइनस प्लस BrO3 this is also aqueous plus 6H plus, they will give the product, this is equal to 3Br2 plus 3H2O. If we have this reaction, so you can also write rate of reaction for this. You can rate of reaction for this, we can write it minus 1 by 5 change in concentration of Br minus by dt, and for this minus 1 by, क्या करेंगे, कोफिशिएंट एक ही है तो सिंपली हम इसको क्या लिखेंगे, d BrO3 minus by dt, and for this minus 1 by 6 d of H plus by dt. These are the rate of reaction with respect to reactant, and for the product these are also equal. For the product it will be plus 1 by 3 d of change in concentration of Br2 by dt, and it is also equal to plus 1 by 3 d H2O by dt. These are the change in concentrations. We can write generally for these reactions, these are for a general reactions and these are for a specific reaction. अभी ये न्यूमेरिकल्स में हमारी किस तरह से हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें गिवन होगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें दिया होगा, देन ही कैन आस्क यू दैट फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन. तो सिंपली क्या करोगे, उसके स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दोगे. कई कंडीशन में तुम्हें क्या दिया जाएगा कि हमें ये गिवन है, देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपली डिवाइड. अगर ये गिवन है तो हमें फाइंड आउट करना है चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वल पुट अप कर देंगे. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इससे रिलेटेड भी कुछ हमारे पोर्शंस आ जाए. ठीक है, यहाँ पर जो सिंबल हमने बताए, ये सिंबल्स हमारे क्या होते हैं, डेल्टा हमारा रिप्रेजेंट करता है किसके लिए, स्मॉल चेंज के लिए, और डी हमारा रिप्रेजेंट करता है किसके लिए, लार्ज चेंज के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स फॉर द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड द रेट विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं. इसके बाद जो टॉपिक हमारा आएगा कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. ओके, टिल